ऐसी शख्सियतें हैं जो अपना बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज पे, जिस तरीके से शेखुजमा साहब है IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी के रैंक पे होकर रिटायर्ड, इन पर कोई एलिगेशन, ऐसे कई ऑफिसर हैं। मैं तो समझता हूँ जैसा कि हमारे शेख नदीम साहब ने बताया कि हमारे अफराद जो है इस गवर्नमेंट मिशनरी में नमक के बराबर, तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कम से कम वो नमक ही हो, लेकिन नमक ना हो ऐसा नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की, लोग साथ में आए, अच्छे अपराध हमको मिले। हमारे आमिर खाजी साहब जो LLM के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, खालिद हसन साहब हमारे पास जो एक बेहतरीन कोच है, और कई स्टूडेंट उनके शागिर्द हैं और कई स्टूडेंट उन्होंने पैदा किया है। तो ला के लिए बहुत सारे अफराद हमारे पास काम कर, लेकिन जुडिशियल एक सिविल सर्विसेज एकेडमी वालों से मुलाकात हुई, एक सेमिनार था जिसके अंदर मैं भी था शरीक। तो वो बता रहे थे कि हमने एग्जाम में पास बहुत मुतासिर बोले कि कोई काम नहीं कर रहा है आप लोग, कोशिश भी तो शुरुआत आप लोगों की कोशिश और हमारी मेहनत दोनों में कुछ रिजल्ट देखा है। इस तरीके से हमारी मीटिंग में भी आप आते रहे, आप अपने कीमती मशवरों से हमको नवाजें कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो टेक्निकल हैंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बनाते हैं, ये ऑफिस होगा, हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद कोई दूसरा ऑफिस में, तो हमारे मीटिंग्स तो कहीं पर भी हो सकते। हम तो बहुत बड़ी जगह लेने वाले थे, हमारे सैफुल्लाह जैसे टैलेंटेड और हमारे जज साहब के दोस्त भी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई फैदा मुस्तफ़ा साहब अगर से आते हैं तो ये जगह बस नहीं, मैं बोला अभी बुलाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बाद में बुलाएंगे, अभी तो हमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं कि वाकई जज्बा है नहीं, तो इससे थोड़ा सा पता चल रहा है कि हमारे पास है, इंशाल्लाह से बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और हमारे जज साहब को हम सुनेंगे और उनके कीमती मशवरे हमारे लिए फायदेमंद। थैंक्स। Very good. अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कुछ मशवरे तो ठीक है, पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और दूसरी बात I'll try to talk in English also because the exam that you're going to write is going to be in English. And one thing that I've realized in our community is that English happens to be our weakness. Okay, अब तो निजाम नहीं है, तो English तो सीखना ही, there is no alternative. तो जो तेलुगु मीडियम से आते हैं उनका ये फिर होता है कि तेलुगु आके इंग्लिश नहीं आती, जो उर्दू मीडियम से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हिंदी तेलुगु वो जो भी आती है तो एग्जाम देखिए, जैसे पोस्टर पे सारे एग्जाम्स लिखे हुए हैं, APP हो या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हर एग्जाम, DS लॉ एग्जाम एक्सेट्रा, all of them are conducted in English. तो ये पहली चीज, before you write any competitive exam, the one thing that you need to know is English. इसका कोई alternative नहीं। और कम्युनिकेशन तो की बात, ठीक है, वो तो बात करना फ्लुएंसी इट विल कम ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस, कि अगर आपके पास माहौल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता कोई भी जबान सीखने की, लेकिन द बेसिक स्किल ऑफ रीडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग एंड राइटिंग, ये स्किल कम से कम आपको चाहिए कि आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको आपको समझना है बहुत आसान तरीके से,
और फिर आप जो लिखना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में आपको विद अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस यू हैव टू एक्सप्रेस इट ऑन योर पेपर। ये स्किल आपको भी चाहिए, ठीक है। अगर ये स्किल नहीं है तो फिर वो नॉलेज का उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, because until something on the paper there's no point। तो याद होंगे सारे सेक्शंस, याद होंगे, सीआरपीसी आपने छान डाली होगी, सब ठीक है, लेकिन अगर जब तक आप एग्जाम में लिख नहीं पा रहे तो नो पॉइंट। तो दैट्स वन। अच्छा, रही दूसरी बात इंग्लिश की, क्योंकि मैं बात कर रहा था, आई होप यू नो व्हाट इडियम इज। इडियम किसी को, एनीवन, लेट दिस बी इंटरेक्टिव। इडियम आपने कभी सुना है क्या होगा? हो सकता है मुहावरे इंग्लिश होता है एडिक्स, वो मिल नहीं जाएगा। इडियम इज इफ आई से समवन हैज किक्ड द बकेट, अब इसका मतलब ये नहीं कि उस पे वो ला था, व्हाट डज इट मीन? समबडी हैज, एक इडियम है टाई द कैमल। इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं, अंग्रेजी में काफी ज्यादा यूज करते हैं कि लेट अस टाई द कैमल फर्स्ट। टाई द कैमल का मतलब ऊंट को बांधना। किसी को डज एनीबडी नो वेयर डज दैट कम फ्रॉम? व्हाई डू वी से टाई द कैमल? ये तो अंग्रेजों को भी नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन आपने अगर कभी सुना हो या ये हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, एक सहाबी थे, जो सहाबी उनके पास है और जो ऊंट को बांधने की रस्सी थी वो उनके पास ही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये आपने ऊंट को क्यों नहीं बांधा? सहाबी ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि नहीं, आप पहले ऊंट को बांधिए, उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़। ठीक है, तो मेरा काम अब यहाँ पर ये है कि ऊंट बांधना मैं सिखा सकता हूँ, अल्लाह पे छोड़ना तो यकीन आपके दीन और आपके, ठीक है। तो ऊंट कैसे बांधते हैं फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशंस? क्योंकि अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स? जुडिशरी ज्वाइन करने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर? ओके, थैंक यू, मोस्ट ऑफ यू। क्लैट कौन दे रहे हैं? क्लैट कीजिए। नहीं, अच्छा आप नहीं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि क्लैट भी है, ये सब है, तो शायद नहीं है, तो आई विल रेस्ट्रिक्ट माय सेल्फ टू जुडिशरी तो आई जस्ट रेस्ट्रिक्ट माय सेल्फ टू दैट। अच्छा, जुडिशरी में देखिए, एक पहली चीज बिफोर आई गेट टू इट, यू नीड मोटिवेशन। से कोई लोग बोल रहे हैं कि देखिए आप ना, आप मदद करें,
boards, all of them are. तो आप एक घर में रहेंगे तो पूरा करियर आप वही घर में रहेंगे, क्योंकि आपका ट्रांसफर अगर होगा तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक, ठीक है, यू आर इन द सेम सिटी, दैट्स वन एडवांटेज ऑफ स्टेइंग इन दिल्ली. बट अदर देन दैट देयर इज नो पर्टिकुलर एडवांटेज. In fact, Delhi judiciary have a few friends, also उनके promotions काफी slow है. So from junior civil judge to senior civil judge, it takes almost 12-14 years for them. Whereas तेलंगाना में 8-9 साल में आप लग जाते हैं. So the promotions are quite slow in Delhi. तो Delhi judiciary का अगर आपका खास रीजन है कि नहीं आपको दिल्ली जाना है, हैदराबाद छोड़ना है या साउथ इंडिया में नहीं रहना है, तो ठीक है ना. I will simply suggest कि आप कोई एक स्टेट टारगेट. You cannot sail in several boats. Target one state and keep that as your aim. एपी भी आप टारगेट कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि सिलेबस एपी और तेलंगाना का सेम है. एक्ट के जो नाम है वो बदल गए. तेलंगाना गेमिंग एक्ट, एपी गेमिंग एक्ट, तेलंगाना एक्साइज एक्ट, एपी एक्साइज एक्ट, अंदर सब सेम. बस आपको एपी की जगह तेलंगाना लिखना है, बस कुछ नहीं. सो यू कैन टारगेट दीस टू. Recording in This thing that I took my plan. बेसिकली OMR शीट पे सीडी बनाकर आ, क्योंकि कुछ आता नहीं है तो एक सीडी बना, ठीक है, बट वो नहीं कर, ठीक है. दैट इज जब मतलब इतने मजबूर हो लाचार, यू कांट स्टार्ट विद दैट प्लान. तो प्रीलिम्स 100 क्वेश्चंस, 100 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है, नो नेगेटिव्स. एंड आपके पास टाइम कितना है, 2 घंटे का. और टाइम बहुत है. प्रीलिम्स और मेंस में देखिए ये डिफरेंस होता है कि मेंस में आपको टाइम का कम, मतलब यू विल फील द प्रेशर ऑफ टाइम, बट इन प्रीलिम्स देयर इज अबंडेंट टाइम. इतना टाइम रहता है आपके पास कि यू विल मार्क द करेक्ट आंसर, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं ये कुछ ट्रिक क्वेश्चन होगा, एंड यू विल चेंज द आंसर, ठीक है. तो इट्स आल्सो अ डिसएडवांटेज. So there's a lot of time. What you need to get is about 70 marks. Prelims में 100 मार्क में से आपको चाहिए 70. To be on a safe side, ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी, ठीक है. बीसीई अगर आपके पास है, देखिए आपके पास बीसीई हो सकता है, और ये अच्छी बात है कि बीसीई का रिजर्वेशन है, तो एक आधा सीट आपके पास है. जैसे लास्ट ईयर को नोटिफिकेशन में 3 सीट्स थे बीसीई के लिए, उसमें से वो 3 में से एक वाज ओनली फॉर वुमेन, 2 वर जनरल. बट बीसीई रिजर्वेशन है तो है, लेकिन फॉरगेट दैट वो रिजर्वेशन. आप अप्लाई कर लें लेकिन भूल जाएं, क्योंकि ट्राई करें कि आप जनरल कैटेगरी में ही आपका रैंक आ सकता. ये बीसीई का जो रिजर्वेशन वो सेफ्टी है. अगर खुदा ना खास्ता कुछ नीचे ऊपर होता है तो आपके पास बीसीई काम में जब आने, ठीक है, वरना तो योर टारगेट शुड बी जनरल कैटेगरी. तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आप जनरल कैटेगरी के लिए, वरना तो बीसीई के लिए आपको प्रीलिम्स में 52-53 भी आ जाए तो यू क्लियर, ओके. बट फिर आप भूल जाए इस चीज को, क्योंकि फिर आप ये करेंगे कि आप 52 मार्क्स क्योंकि सिलेबस मेंस का सेम है. मैं आपको बस बता रहा हूँ फॉर्मेट क्या है. मेंस की बात कर रहा हूँ. 4 पेपर्स होते हैं. फर्स्ट होता है लैंग्वेज एंड एस्टिंग, वहां पर आप और लास्ट फर्स्ट पेपर और थर्ड है लैंग्वेज. लैंग्वेज में लैंग्वेज का जो है वो है क्वालिफाई,
इसका मतलब है you need to score only 50 marks. रूल ये है कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट जो होता है, क्वेश्चन फॉर्म में जो स्टेटमेंट होता है, उसमें मॉड्यूलर वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट का. मैं आपको अभी नहीं पढ़ता समझा रहा हूं सर, ठीक है. मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टेक्निकल रूल है. आर इज अ वर्ब, आर पहले आना चाहिए, यू आर अ सब्जेक्ट, टू बाद में आना चाहिए. क्वेश्चन फॉर्म, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट को कहते हैं क्वेश्चन. जो होते हैं, जो आंसर होते हैं, आई एम गोइंग देयर, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब आता है. आई एम गोइंग देयर, आई एम अ सब्जेक्ट में पहले आना. ठीक है, ये रूल है. लेकिन आप अगर रूल नहीं भी मान तो आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये गलत है. तो आपके ग्रामर में यू विल मैनेज. तो लैंग्वेज पेपर से नॉट वरी एट ऑल. ठीक है, लैंग्वेज पेपर में मत ज्यादा यू, बिकॉज देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लैंग्वेज पेपर में, फिर उसकी वजह से आपके सिविल और क्रिमिनल पेपर जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो. ठीक है, तो ये अलग है. अच्छा, अब आ है सिविल और क्रिमिनल पेपर. सिविल क्रिमिनल पेपर में वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड डिफिकल्ट इज टाइम. एक चीज है, और दूसरी चीज है that both these papers are conducted on one single day. तो 10 से 1 बजे तक सिविल पेपर होगा, 2 से 5 बजे तक क्रिमिनल पेपर होगा. ठीक है, तो फिर तो आपका मतलब अगर दोपहर में सोने की अगर आपकी आदत है तो वो तो नहीं है, नहीं होने वाली है. 1 घंटे में यू हैव टू बेसिकली ईट, फिर हाथ तो आपका थोड़ा जवाब देना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब कुछ जैतून कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू डू.
तो कुछ ना कुछ आपको करना है टू मेक श्योर दैट योर हैंड वर्क्स प्रॉपर्ली फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। एंड ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे, जैसे अभी उन्होंने भी कहा था कि कई काबिल लोग होते हैं, देयर आर पीपल हु आर वेरी एबल, आप नॉर्मली उनसे मिले तो उनको मालूम होता है बहुत ज्यादा, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का डिफरेंस वो रख के बता देंगे, 299 300 सब रटा हुआ है, ठीक है। वहां जाके लिख नहीं सकते क्योंकि वहां जाने के बाद ऐसा उनको ऐसा मैंने आलसीपन के ठीक है लिखेंगे, इतने में क्या हो जा रहा, और एग्जाम एक बला के जैसी है कि बला तो बस, है ना। तो ये सब है, और ये एक्चुअली होता है, मतलब अच्छे लोग और इंक्लूडिंग मी, ओके, कि क्रिमिनल पेपर में आप 3 घंटे का सिविल पेपर लिख चुके, 1 घंटे का ब्रेक, ठीक है, उसके बाद आपका क्रिमिनल पेपर स्टार्ट होता, पहले 1 घंटा तो चलो थोड़ा जोश में लिखते हैं, उसके बाद जो दूसरे घंटा और तीसरे घंटा में ऐसा रहता है कि खत्म, ठीक है, जो होगा फिर देखा जाएगा तो खत्म, ये नहीं है। और ये जितना भी आप मेंटली स्ट्रांग कर ले टू हैपन, तो इसका इलाज क्या है, व्हाट डू यू डू, इसका इलाज है कि ठीक है, दिस आप यकीन मानिए, the only reason I would have cleared the exam, or the only reason a lot of people would have cleared the exam, is because they practiced a lot. आप जितना भी पढ़ ले, जब तक आप 3 घंटे बैठकर 10 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं, you are not in the race. Not in the race. It's a competitive exam. बोर्ड एग्जाम नहीं है कि कोई जबरदस्त के आपको लिखा देंगे तो 70-80% से पास हो गया, वो कॉम्पिटिटिव नहीं है ना, वहां पर तो 100% भी पास हो सकते हैं। आपको जितना चाहिए तो उतनी जबरदस्त होगी। ये फॉर्मेट से सिलेबस अलग है, ऑफ कोर्स फॉर्मेट से, फॉर्मेट ये है कि ईच पेपर इज 100 मार्क्स, सिविल पेपर 100 मार्क्स का है, क्रिमिनल पेपर 100 मार्क्स का है, लैंग्वेज भी 100 मार्क्स है, बट वो क्वालिफाइंग है तो यहाँ पर आपको 50 चाहिए। सिविल पेपर में और क्रिमिनल पेपर में 100 मार्क्स जो है, देयर आर 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो ईच क्वेश्चन इज 10 मार्क्स। अभी हो सकता है कि वो 10 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें सब पार्ट्स भी हो, तो फॉर एग्जाम्पल there might be a question saying write short notes on A, theft, B, criminal breach of trust, C, criminal misappropriation of property. सारे offenses against property है, ठीक है, आईपीसी में, मतलब आप जानते होंगे, या ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं what are the differences between these things. ये सब पार्ट्स एक, तीन सब पार्ट्स है, तीन और 4 there are 10 questions. Each question is worth 10 marks. बहुत simple, कोई choice वगैरह नहीं, कुछ छोड़ के आ सकते हैं, क्या टाइम 3 hours, 3 घंटे का टाइम, आप हर क्वेश्चन को 20 मिनट देते हैं तो you will come to only 9. 1 घंटे में 3 होंगे, 3 घंटे में 9, एक छूट जाए। अगर 15 मिनट देते हैं तो फिर आपके पास लास्ट में टाइम यू विल सेव हाफ एन आवर, राइट, 4 and 2. तो बेटर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट इज कि आप पहले 1 आवर में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस टेक 20 मिनट्स ईच, उसके बाद फॉर द रेस्ट ऑफ द 7 क्वेश्चंस टेक 15 मिनट्स ईच, फिर भी लास्ट में आपको 15 मिनट बचाएंगे, बट दैट्स अ ग्रेस, कहीं ज्यादा अगर आप। Now the mistake a lot of people do is कि क्वेश्चन पेपर पहले आप कई लोग देखते हैं तो एक ऐसा सवाल मिलता है जो आपको, मतलब आप माहिर हैं, वो आप पेश नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो लोग उस सवाल पे 1 घंटा लिखते हैं, ठीक है, मर्डर और कबूल होमसाइड का, क्योंकि इतनी बेसिक चीज है ना ये, कि सबको आता, और ये वर्ड्स इतने रिलेवेंट दिखते कि आपको दिखता कि केस लॉ से याद है, सब कुछ याद
याद है इलस्ट्रेशन, एक एक सारे एक्सेप्शंस याद है, 500 300 के एक्सेप्शंस आपको याद है, सब कुछ याद है। तो आप शुरू करते तो मतलब ऐसा होगा कि आप इसी क्वेश्चन के लिए मैं एडिशनल पेपर भी लूँ, बट आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? मैक्सिमम कितने? 10 नहीं मिलेंगे, ठीक है। 10 तक का कोई क्वेश्चन नहीं है पेपर पैटर्न के हिसाब से, ज्यादा ज्यादा आपको मिलेंगे 7। आप कितना भी बेहतर लिखिए, यू विल गेट 7। मान लीजिए आप बहुत मतलब बेकार सा आंसर लिखते हैं, मतलब इट्स नॉट इवन इंप्रेसिव, तो आपको 2 मार्क तो मिलेंगे कम से कम, है ना। तो मार्जिन आपका क्या है? 2 to 7, ठीक है। 2 मार्क तो आपको कम से कम मिले, आपको अटेम्प्ट करने पे 2 मार्क मिलेंगे, और करेंगे तो 7 मार्क्स। तो नेवर वेस्ट टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन, ठीक है। ये कई लोगों की मिस्टेक होती है कि अगर आपको जब if people know something they go on in over and over. No, never waste too much time on any question. 20 minutes आपने फिक्स कर लिया कि पहला सवाल 20 मिनट्स का होगा, 20 मिनट खत्म तो वहां पर आपको कंक्लूजन लिखना है और अगले आंसर को जानना। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना है कि I had the time to do so, there would be nothing to gain from, तो ये नहीं। So this is to follow. अब ये हो गया बेसिक फॉर्मेट। Now I'll come to syllabus and I'll tell you how exactly to go about it. आप प्रीलिम्स का आप एक पहला काम कि आप नोटिफिकेशन देखें तो सिलेबस वहां पर दिया जाता है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, स्टिक इट इन योर बुक। Syllabus is something that you have to follow hard and fast. Okay, you should necessarily follow the syllabus. जो syllabus में नहीं है वो नहीं पढ़ना। syllabus का उसका आप प्रीवियस के पेपर्स आइडिया सवाल कैसे बन रहे हैं, आपको ये भी आइडिया कौन से सब्जेक्ट से एक ऑर्डर 21 भी कंप्लीट नहीं होगा। ऑर्डर 21 इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, ओके, एग्जीक्यूशन, वो भी आपसे कंप्लीट नहीं होगा। तो आप प्रीलिम्स में देखिए कि सवाल कहां से आ रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। कितने सेक्शन है उसमें? डज एनीबॉडी नो? 31 33 ऐसा है, मतलब कि 15 ही है, बाकी सब वो शॉर्ट टाइटल फिर लास्ट में रिवील, वो सब अलग बात है। 15 सेक्शंस, आप अगर वो 15 सेक्शंस 3 बार पढ़ लें, यू आर श्योर ऑफ अबाउट 8 to 10 मार्क्स इन द प्रीलिम्स। पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही दिन करना है, लेकिन क्योंकि ये एक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देयर इज सो मच पेंडेंस बिकॉज़ ऑफ है, तो बहुत सारे डीवीसी के केसेस बहुत आपको मिलेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस। तो इतना इम्पोर्टेंट यू ऑन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। 75 सेक्शंस, अगर वो एजेंसी वगैरह आप निकाल दें तो मेनली तो about 75 सेक्शंस। You do that 75 sections, you will get about 10 to 12 questions from there. तो ये आप देखें, find this out कि कौन से सब्जेक्ट में कितने आप सवाल वो कर सकते हैं। Okay, that is one thing that you should do. Prelims आपका क्लियर, मतलब इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। You need about 70, but if you follow this ही हो जाएगा। लोग फिर एक चीज करते हैं कि उनको दिखता है कि सीआरपीसी बहुत मुश्किल है, या सीपीसी बहुत मुश्किल है। ये प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स है ना, तो दे आर वेरी ड्राई, मतलब आपकी गलती नहीं है, ये वो सब्जेक्ट ही काफी ड्राई। आईपीसी पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। सीआरपीसी में देन यू विल फाइंड कि यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन बेल, एंटिसिपेटरी बेल, बेल इज नॉट बेल, गेट कंफ्यूज्ड। तो सीआरपीसी एंड सीपीसी ऑनेस्टली यू कैन कम टू इट अ लिटिल लेटर। अब ये बाद में कर सकते हैं, आप वहां से शुरुआत मत करें। आप इतने ड्राई सब्जेक्ट से शुरुआत, डोंट स्टार्ट विद दैट। Start with something that is interesting to you and that is manageable to you. आपको दिख रहा है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, तो आईपीसी अगर आपका इंटरेस्ट है तो डू आईपीसी, डीवीसी इंटरेस्ट है तो डू डीवीसी, ओके। ऐसे आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट एंड देन सीआरपीसी सीपीसी पे यू विल कम टू डू इट टुवर्ड्स द एंड। इसलिए क्योंकि सीआरपीसी सीपीसी आप खत्म कर नहीं सकते,
तो अगर उसमें अगर आप रहेंगे तो फिर वो यू कांट कम आउट ऑफ, सो दैट्स वन. देन यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट्स. अच्छा, इसमें ये भी याद रखना कि आप जब कोई बेरैक कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशंस जो होते हैं आईपीसी में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है. ए कीप्स गिविंग दैट इन एवरी इलस्ट्रेशन. तो आईपीसी में तो इलस्ट्रेशंस आपको करने हैं, बिकॉज़ इलस्ट्रेशंस आर गिवन एज क्वेश्चन. इस पे आपको सवाल दे भी गोइंग टू आस्क यू व्हाट नेक्स्ट कम्स मेंस का. अगेन क्योंकि सिलेबस वही है, बस इतना डिवीजन है, सिविल पेपर अलग, क्रिमिनल पेपर अलग, जो प्रीलिम्स में नहीं था. Do we need by heart the We need to by heart the sections of prelims. Yes, you don't have by heart as it is, but you need to know the essential ingredients of it. अगर मैं आपसे पूछूं what is theft, it's pretty easy. ठीक है, what is theft? Which section? 3. नहीं, आईपीसी तो इजी है, कॉलेज में पढ़े होंगे. 378. Theft is 378. इसका punishment है 379 में. अरे theft is 378. अगर मैं आपसे पूछूं कि what is theft, तो आपको ये नहीं लिखना है कि stealing, ठीक है, नहीं. Then a person dishonestly takes movable property out of the possession from another without consent. That's theft. अब आपको सेक्शन एज इट इज याद नहीं रखना है, बट जो कीवर्ड जो एसेंशियल्स हैं, ऑल ऑफ देम यू हैव टू रिमेंबर. तो एसेंशियल्स क्या है? नंबर 1, मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं हो सकता, इट हैज टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी. नंबर 2, डिसऑनेस्ट इंटेंशन. नंबर 3, टेकिंग इट आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर. Right? And the last is without that person's consent. तो ऐसे आपको सेक्शंस याद रखना. अगर I don't know if the projector, मैं अगर होता तो I would have shown you how exactly to go about it. Yes, आपको बोर्ड चाहिए? नहीं, प्रोजेक्ट. हाँ, नहीं. I have time, right? My time. 15 minutes? Okay. Just a moment. आप आइए तो एक सेक्शन तो याद करके. गुडविल का थेफ्ट होता है. So another company will start up with the same name. It's called passing off. उसको बोलते हैं passing off. गुडविल. सर बोलिए, आपको कौन सा वेबसाइट चाहिए? कोई भी आप सेक्शन 378 सर्च करें. गुडविल का जो है वो पासिंग ऑफ है. मतलब गुडविल एज इन फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट. मैं कोई कंपनी एंड आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट, लेट्स से लाइक व्हाटएवर आई एम मेकिंग एन आईफोन. आई मीन एप्पल इज मेकिंग एन आईफोन. इफ आई मेक द सेम फोन with the same logo and sell it, what I am doing is I am using their goodwill. I am using their trademark also. I am using their goodwill also. ये passing off है. This does not come under section 370. This will be a infringement of an
intending to take dishonestly movable property of the possession illegal without person's consent, proves that property in order to take such taking is said to have committed theft. मैं ये बता रहा हूँ how exactly break this down. Keywords आपको कैसे आते हैं? अगर आप पूरा याद करने बैठेंगे तो याद नहीं होने वाला. अब 10 सेक्शन में you will feel saturated. फिर वो पहले सेक्शन तक पहला सेक्शन आप भूल जाएंगे. There's no point. So what you need to do is break the section and या एक्सक्लूसिव पढ़ेंगे तो you will understand. But variants मैं बता रहा हूँ. Now mark this intending honestly. ये हो गया फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपका. ठीक है. This is your second. Okay. Out of the possession of that person. ये हो गया थर्ड इंग्रेडिएंट. Without person's consent. So this is the second. There are 4 ingredients. Now you have to remember it. You just have to remember 4 ingredients. तो यहाँ से whoever से याद ही रखना है. अब बस इतना याद रखना है कि एक movable property चाहिए. Dishonest intention, taking it out of possession without the person's consent. That is theft. अच्छा, let's say if I come to your house, I find something like sofa पे है और right next to it there's a coffee table. I find a ring. Illustration में है, तो मैं just giving that same thing here. There's a ring. आया वहां पर एक कुछ कीमती चीज वहां पर रखी थी. एक रिंग था, एक मूर्ति. I take it with a dishonest intention, basically of committing theft. कि मेरा इरादा था कि मैं चुरा लूं. ठीक है. But वो लेने के बाद हाँ, रटना ये है कि कीवर्ड्स आपको रटना है. यू कैन नॉट राइट, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए इसमें आता है तो यू कैन नॉट राइट whoever with a bad intention. When a person does it with ill intention, in a bad day, mad by day, नहीं, dishonest intention. Word है dishonest. It's any property that is can be moved. It's movable property. तो सारा सेक्शन आप मत रखिए, बट ये कीवर्ड जो है ना, ये आपको 10 बार अगर आप दोहराएंगे तो यू विल गेट इट. ये आपको वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर. ठीक. देयर आर इलस्ट्रेशंस आल्सो. ये इलस्ट्रेशंस भी समथिंग दैट यू हैव टू डू. ओके. तो दिस इज हाउ यू डू योर बेराइट. ये आपको हर बेराइट, आप जब भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, कोई भी सेक्शन, तो मार्क द पार्ट्स एंड फाइंड द इंग्रेडिएंट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दोस इंग्रेडिएंट्स. अब इसमें आंसर कैसे लिखते हैं? ठीक है. I'll just tell you आंसर इसमें कैसे लिखते हैं. ठीक है. अगर मान लीजिए थेफ्ट पे क्वेश्चन आता है, which is very common. ठीक है. थेफ्ट पे आता है ये नॉर्मल क्वेश्चन. तो बेसिकली what you have to do is write the section in according to those ingredients, right? So you start by saying, अगर मान लीजिए थेफ्ट आ गया क्वेश्चन, सेक्शन 378 defines theft as यहाँ पर सेमीकोलन. Now you write it in bullet points.
क्या when a person with dishonest intention, so dishonest intention moves a mobile property out of the possession without that person's consent. This is how you. ये जो पैराग्राफ है, ये सारा पैराग्राफ आपको नहीं, you have to write that ingredient in bullet points. नीचे कोई एक केस लॉस याद करने की कोशिश कीजिए. अगर आपको केस लॉ नहीं याद आता है तो एटलीस्ट राइट एन इलस्ट्रेशन. कोई एग्जांपल अपने खुद के दिमाग से आप मेक एन इलस्ट्रेशन आउट ऑफ इट एंड राइट इट. इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू राइट दैट मच, यू विल गेट योर मार्क्स. बस इतना ही है. तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि मेंस तो कितने इस बार 700-800 लोग तो लिखे थे, बट सेलेक्ट होने हैं वही 50-60. So there's almost 1:10 ratio. Theft का जो definition है वो everybody knows. सारे 700 लोगों को, चलिए 50-100 रहते हैं ऐसे, पर कम से कम 600 लोगों को तो theft का definition आता ही है. And when a question is asked on this, everybody. But how you write will give you one additional mark, and that put you above the competition. Okay? So that is important. Okay. Now, I have this. So that's how you do these sections. एक दूसरी चीज विद रिगार्ड टू केस लॉस. केस लॉस काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एविडेंस एक्ट ऐसे चीजें हैं कि बेयर एक्ट में जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट. तो केस लॉस हैव एडेड लॉट मोर टू इट. तो ये केस लॉस भी यू हैव टू रिमेंबर. इट विल लुक वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट कि इतने केसेस याद कैसे रहने वगैरह, बट हर सब्जेक्ट में कुछ 25 से 30 केसेस होते हैं जो आपको याद करने हैं. एविडेंस एक्ट में ज्यादा से ज्यादा 30 केसेस होंगे. सीआरपीसी में केस होंगे जो करने लायक है. कुछ कुछ जगह ऐसे केसेस होते हैं, जैसे सीपीसी में आपने कोई केस सुना होगा, सालम एडवोकेट बार वो इतना इंपॉर्टेंट केस है कि सीपीसी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो केस लॉ आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो केस लॉ ही 500 पेज का जजमेंट है. तो कहीं ना कहीं वो बात तो कही गई होगी ना. मतलब essentially you are कुछ होगा, you can do that. कुछ नहीं है तो illustration, but case laws are important. तो number 1, good reading of Bayer Act. ठीक है. Number 2, case laws, and third is illustrations. ये अगर आप 3 चीज कर रहे हैं, that is sufficient. That's how you write your mains. And time management का मैंने आपको already बता दिया. ठीक है. ये तो prelims और mains, this is how you do it. और जो सिलेबस है वो previous year papers in mains are really important. I'll give you the reason why. एक आप previous year paper 5-6 साल के रहेंगे तो you will notice a pattern कि कहां से सवाल आ रहा है. A contract is vitiated by 5 things. Free consent is vitiated by 5 things. What are those? Anybody? किसी को याद है? नहीं. Vitiated by what? Misrepresentation. ठीक है. Coercion, undue influence, mistake, fraud. ठीक है. Remember the line में 15 is coercion, 16 is undue influence, section 17 is fraud, 18 is misrepresentation, 19 is rescission of the above 4, 20, 21, 22 is mistake of law, mutual mistake, bilateral mistake. Yes. ठीक है. इस तरीके से आपको याद है. तो ये जब 5 चीजें हैं which vitiate consent. Vitiate का मतलब which reduce consent, which take away consent. मैं अगर आपको गन बता के बोलूँगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो आपने तो फ्री विल में तो नहीं किया. You have been forced. What is coercion? ये सिंपल सी बात है. मैं आपको ये बताऊं कि देखो यार बाहर जो कार खड़ी है ना वो मर्सिडीज बेंज कार है, मैं तुमको 10 लाख रुपए में दे दूंगा, आपको शो कर देगी, बाहर जाके मारुति मिलती है. मिसरिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको कोई और चीज बताई है ना. तो ये एग्जांपल से यू विल रिमेंबर. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि ये 5 अगर आप अच्छे से पढ़ लें, देयर विल बी फॉर श्योर अ 5 मार्क क्वेश्चन इन द सिविल पेपर. प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने का फायदा यही है कि आपको पैटर्न समझ में आता है. लास्ट ईयर अगर कोर्शन पे सवाल पूछे तो इस बार शायद फ्रॉड पे सवाल पूछे. ठीक है. तो वैसे मैं अगर I don't know how many of you might have done CPC properly, but CPC में एक एरिया है special suits. Order 20
7 से स्टार्ट होते हैं. Order 27 is suits against the government, by and against the government. ठीक है, all of the partnership by soldiers, etc., etc. They're special suits. Then 34 is mortgage suits, order 34. Order 35 is interpleader suit. Order 36 is friendly suits. ये सब ये special suits हैं. Okay, ये एक कोई particular situation में they'll be there. Okay, I'll explain. There's time. Okay, I'll explain. Okay. Interpleader suit, for example. What is an interpleader suit? आपने नाम सुना है कभी? Interpleader suit क्या होता है? मैं इसलिए बता कि last paper में, last mains में there was a 5-mark question on this. ठीक है? What is an interpleader suit? Civil suit का मतलब तो आप you would know, right? Okay. What is an interpleader suit? Interpleader suit is when you do not have any interest yourselves, but you want a suit to be conducted. For example, ठीक है? मान लीजिए there is A who comes to me. कोई एक इंसान है A, वो मुझे मैं उससे ये कहता हूँ कि यार मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है, तो do one thing, give me 10,000 rupees. उधारी के लिए, ठीक है? Give me a debt of 10,000 rupees. I have asked him A, मुझे जरूरत है, मैंने A से मांगा, ठीक है? A कहता है कि ठीक है मैं तुमको दे दूंगा. तो A ने किया ये काम कि A ने B को दिए पैसे. Okay, A has given that money to B and asked B to give it to me. तो डायरेक्ट मुलाकात मेरी A से नहीं हुई. What did A do? A gave it to B and asked B to give it to me. ठीक है? Let's say I am X. Okay, मुझे मिल गए पैसे. मैंने वादा किया था कि मैं 1 महीने में लौटा दूंगा. I'll return it in a month. Now the thing is, after a month, B comes to me and asks me for that money. समझ गए ना facts यहाँ तक तो आप? ठीक है? Should I repeat? No? Yes? Okay. I'll repeat. There's A. I ask A to give me 10,000 rupees. यार मुझे सख्त जरूरत है, आप मुझे 10,000 रुपए दे. A क्या करता है? उसका कोई दोस्त है B, वो उसको पैसे देता है और मुझे भेजता है कि यार देखो मैं तो उससे मिल नहीं रहा हूँ, तो तुम ये पैसे ले लो, उसने मांगे थे, give it to him. B has come to me, X, and he has given me the money. Vale? I had promised that in a month I will return it. 1 महीने के बाद B comes and asks me, please give that money back. What will be my ask? मेरा जवाब क्या होगा? Right? I did not promise it to you. Yeah, I will say यार देखो ये तो तुमने थे, but तुम्हारे पैसे नहीं थे. मैंने तो A से मांगे थे ना पैसे, तो मैं A को लौटा दूंगा. I'll return it to A. तुम क्यों आए बीच में? तुमसे तो बस ऐसे पहुंचवाया था. You were just a messenger. ठीक है? I will just give it to A. B will say नहीं, मुझे ही दो क्योंकि मैंने दिए थे. तो I call A कि भाई ये क्या बात है? B खुद पैसा मांग रहा है मुझे, तुम्हें देना है कि B को देना है? A कहता है नहीं मुझे ही दो. अब I am confused कि मैं किसको दूं? Should I give it to A or should I give it to B? मैं देने के लिए तैयार हूं, but I don't know किसको दूं. So what I will do is I will go to a civil court and I will file a interpleader suit. Interpleader suit is a suit where the plaintiff has no interest. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पर. मैं तो 10,000 रुपए जो जिसको देने मैं उसको देने के लिए तैयार हूं. मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं. But there are rival claims. Keywords important. ठीक है? There are rival claims. A और B का rival claim. A भी वही पैसे मांग रहा है, B भी वही पैसे मांग रहा है ना? तो now I'm asking the court कि आप डिसाइड करें कि मुझे किसको देना है पैसे. कोर्ट ये कह सकता है कि आप देखिए 10,000 रुपए तो आप दीजिए, कोर्ट में डिपॉजिट कीजिए, अब आप चाहिए वापस, हम इन दोनों को देख लेंगे, जो केस जीतेगा हम वो जो पैसे हैं वो दे देंगे. इट इज कॉल्ड इंटरप्लीडर सूट. ये ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, बट ये टाइप ऑफ सूट है. ऐसे स्पेशल सूट्स कम से कम 8 से 10 हैं सीपीसी में. अगर आप ये 8 से 10 सूट्स कर लेते हैं तो फॉर श्योर यू विल गेट अ 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम देम. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि पैटर्न कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने 5 चीजें ही किए थे, कोजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, एंड यू हैव गॉटन 5 मार्क्स. यहां से आप सिर्फ सूट्स या 8 सूट्स के आप टाइप्स देख लिए तो आपको मिल गए 5 मार्क्स.
अगर आप हर सब्जेक्ट के ऐसे देखते जाएंगे तो यू कैन एंटिसिपेट गेस अबाउट 60 to 70 मार्क्स आउट ऑफ 100. बाकी के 30 मार्क्स है वो तो होने ही है ना, एग्जैक्टली वैसे तो पेपर नहीं आता है, तो देयर विल बी सम बैक एंड फोर्थ, बट एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स का जो पेपर है दैट यू हैव टू राइट परफेक्टली. That is something that you have to do, and that is how you prepare for means. मतलब ये कुछ strategies हैं. आप एक बार थोड़ा सा syllabus complete करें, then you can work on this also. ठीक है, that's clear. अच्छा, before I end, because I think Rozdar sir भी आ रहे हैं. He's a very senior person. He's already on. Yes, sir. Okay, so I'll just end with the last thing. With regard to interview, you don't really have to worry about the interview. You can think of it like when it comes there. The preparation for interview is completely different. They'll ask you about what your practice is. They'll ask you about your general behavior, knowledge, वगैरह, etc. So that will come a little later. और आजकल के trend भी ऐसा हो गया कि ज़्यादा competition है. So they'll call 80 people for interview for 60 seats. तो बहुत कम लोग हैं जो निकल जाते हैं. Interview तक पहुँच जाते हैं तो that's good. So that is how you basically tackle the judicial. There are any questions? Yeah, questions. 5 minutes questions. प्रीलिम्स के लिए वो जा सकते हैं कि ऑर्डर 35 इज इंटरप्रेटर्स. क्या है, कुछ भी हो, ऑर्डर 35 है, ठीक है, दैट इज व्हाटएवर. बट मेंस के लिए यू टू नो क्या है, क्योंकि अब पास टाइम है. ये तो अभी तो दो मेंस हुए हैं, टेक टाइम फॉर एपी न्यू वंस. Okay, so then that you can work for. Telangana का I think there are going to be like 40-80 seats also this year. तो उसका भी notification आने ही वाला है. So because there is time, अभी तो आप में आप क्या देखा slightly इकोनॉमिक्स किसी ने आपने पढ़ा है तो आपको मैं बता सकता हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड ओके, उसका एक्सेप्शन मनी कहते हैं. मनी इज नॉट रियली एन एक्सेप्शन टू इट, ठीक है, क्योंकि एक हद के बाद यू आर गोइंग टू स्टिल ईट द सेम थिंग, रोम ऑन द सेम व्हीकल. एक हद के बाद वो सैचुरेशन आता है. तो माय मेनली दिस थिंग वाज टू रीजंस. वन इज दैट आई थॉट कि मनी इज नॉट द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी. इससे कुछ और अलग चाहिए, ठीक है. There is good money here also. मतलब अब तो सैलरीज काफी अच्छे हो गए. सेकंड जुडिशियल पे कमीशन आने वाला है, तो इट्स गोइंग टू इंक्रीज. ओके, स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ जज इज गोइंग टू बी a little more than 1 lakh, ठीक है, per month. So there's decent money here also. That's not a problem. And second is independence, ठीक है, and वो बहुत ज्यादा important है. जो प्राइवेट सेक्टर में you won't get it. I worked there. Your boss is always after you. यहाँ पर स्पेशली फिर जुडिशरी में लोग बहुत ज्यादा डराते हैं आपको कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. इतना ज्यादा इंडिपेंडेंस है. आप ये सोचिए
कि अगर आपका मूड नहीं है एक हफ्ते तक, बहुत लेजी है, यू डोंट हैव टू प्रोनाउंस जजमेंट्स। कौन पूछ रहा है आपको? मान लीजिए संडे के दिन आप उठे और आपको लगा कि यार आज मेरे को जजमेंट देना है, कॉल योर पीए टू योर हाउस, a stenographer will come to your house. You can discharge the stenographer in your house on a Sunday. That is the independent. You decide the pace. आप अपना खुद का काम आप खुद डिसाइड करें। दिल्ली वगैरह में बहुत पहले से जा रहे हैं। I know people from like way back who graduated 2005, 2006 who are in Delhi which become district judges now because promotion मिलकर। So there are people. तो तेलंगाना में उसका ट्रेंड नहीं हुआ था, लेकिन अब है, अब आ रहा है। lot of people are preparing for it, so the people are looking up to it, so it's going to happen soon। अच्छा, आपका कोई question? सर आपका टिपिकल डे कैसा होता है? It is said that judges hear like 100, 200, 300 cases each day. इंडियन जजेस का जो है वर्ल्ड में रिकॉर्ड ये है कि they give like thousands of judgments each year when compared to other countries judges. How is your typical day? Please tell us. देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टारगेट्स क्या होते हैं ना। हाई कोर्ट गिव्स यू टारगेट्स ऑफ 17 यूनिट्स, ठीक है, 17 यूनिट का टारगेट होता है पर यूनिट्स कहते हैं। सर यूनिट सर, हाँ, यूनिट, एक यूनिट सर्कुलर है 8 पेज का, उसके अंदर हर टाइप ऑफ केस के लिए एक यूनिट प्रिस्क्राइब है। समरी ट्रायल अगर आप करते हैं तो 0.25 यूनिट मिलता है आपको। एक प्रॉपर पुलिस का कंटेस्टेड केस जो होता है, वो अगर आप सीसी कहते हैं ना, कैलेंडर केस, वो अगर आप करते हैं तो 1 फुल यूनिट मिलता है। तो आपको हर महीने 17 यूनिट्स करने हैं। एवरी 6 मंथ्स रिव्यू होता है, एवरी 6 मंथ्स देयर इज अ रिव्यू। तो 6 मंथ्स में जो रिव्यू होता है उसमें देखा जाता है कि आपने पिछले 6 महीने में कितने यूनिट्स किए। तो ऑन एन एवरेज पिछले 6 महीने में 17 यूनिट्स हैं। तो as long as you're doing that, you're safe. Your confidential review, everything is going to be fine. तो वो उसके बाद है कि आप अपना जो अगर इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के लिए क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 24/7 जॉब, तो थोड़े एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होते हैं। नंबर 1 रिमांड, कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो आई एम श्योर यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ही विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, सीआरपीसी में भी। तो वो एक एडिशनल ड्यूटी होती है कि रात को 9-10 बजे या कभी कभी बहुत रात को भी द पुलिस कम टू योर हाउस विद द पर्सन सेइंग ये रिमांड है, वो एक है। दूसरा है डाइंग डिक्लेरेशंस। इफ अ पर्सन इज डाइंग, किसी ने मान लीजिए सुसाइड कर लिया या किसी ने कोई हादसे में, नॉट एक्सीडेंट बट लाइक अ क्राइम में कोई मर रहा है, ठीक है, समवन हैज बीन स्टैब्ड, ही इज इन द हॉस्पिटल एंड इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है, तो उसका एक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करता है सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट। पुलिस तरफा होता है देयर प्रोसिक्यूशन। सो ये दो काम होते हैं, बट बाकी का जो डे रूटीन आप कह रहे हैं, दी ऑफिस आवर्स इज 10:30 to 5, 6.5 घंटे आप हर रोज काम करते हैं बस इतना ही। और सैटरडे देयर इज नो बेंच, आई एम श्योर यू ऑल नो, तो आपको चेंबर में बैठना है। संडे इज योर हॉलिडे, देयर आर लीव्स, 15 कैजुअल लीव्स, 30 अर्नड लीव्स आफ्टर प्रोबेशन कंफर्म होने के बाद अर्नड लीव्स मिलते हैं आपको। देयर आर इनफ लीव्स आल्सो। तो यू देयर इट्स अ रिलैक्स जॉब। मतलब लोग बहुत डराएंगे कि जजेस हैं तो आपको यहाँ नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हाँ, एडवोकेट से आप ज्यादा ना मिले, ठीक है, ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर गोइंग टू
तो can this statement क्या है, can it be used as evidence to convict him? (27) is discovery, is consequence of the information received. If it is in the presence of the magistrate, yes. That नहीं, this is not in the presence of the magistrate. Only police is answer. Then what? 25 आपने कहा, section 25 एक, और दूसरे लॉ से आप सोचिए और क्या हो सकता है? ये एक्चुअली आप ठीक है, और तीसरा कुछ आप बोल सकते हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 20 plus 2 self-improvement. 20 क्लॉज 3, 2 is double jeopardy, 20 क्लॉज 3 ऑफ सेल्फ राइट अगेंस्ट सेल्फ। तो देखिए एक सवाल है, आपने 3 लॉज के 3 प्रोविजन लिखे, दिस इज व्हाट ये इंटरकनेक्शन इंपॉर्टेंट है, and this will happen only when you practice a lot of answers and somebody is correcting those answers, तब आपको समझ में आता है कि यार यहाँ पर ये भी करते हैं। तो ये मत सोचना कि ये सवाल आया तो ये सिर्फ सीआरपीसी का सवाल है, बाकी सब you have to write all the subjects in interconnection is section like you'll write sure PC, but stop will also के rule of stop, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन 1-2 पैराग्राफ, अगर वो एक्सप्लिसिटली पूछ रहे हैं तो आपको लिखना ही है, बट इट इज I mean, मेरी अभी क्योंकि I am attending my training right now in the State Judicial Academy and we are made to sit rank wise. So I'm rank 3. So I'm like sitting rank 3. I also talk to people right next to me, rank 2 and 1. I've asked them also, they have also not taken additions. So, you know, rank 1 also has not taken additions. So it does not matter. Your additions don't matter, your content matters. So for a 5 marker, I'll say about 1.5 page. ज्यादा से ज्यादा अगर आता है तो 2 पेज मतलब एक साइड, ठीक है, दोनों तरफ में सिर्फ एक साइड, पेज नंबर से हिसाब से, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 में 5 मार्क, 10 मार्क का अगर है तो ज्यादा से ज्यादा 3। हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, कोई एकदम ही बड़ा लिख रहा है तो इट माइट गो टू 4, कोई बारीक छोटा लिख रहा है तो दैट्स वन। सेकंड इज हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर, तो कलर के पेन इस्तेमाल करके लोग करते हैं, डू नॉट डू दैट, ठीक है। लोग ग्रीन भी ले जाते हैं, अभी से ग्रीन नहीं, यू कैन यूज ग्रीन पेन ले, ठीक है, तो यू अभी से, ठीक है, वो आप when you become a guest officer you will get a green pen, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह ग्रीन पेन से कर लीजिएगा, बट नॉट, तो ये डोंट यूज कलर्ड पेन्स, ठीक है, उसी पेन से कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए जहां पे भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सफिशिएंट, एंड कीप इट वेरी सिंपल, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, अंडरलाइंस, ठीक है, दैट इज ऑल दैट यू नीड। ओके, लोग स्केल्स वगैरह भी ले जाते हैं, आई डोंट नो गॉड से मार्जिन्स करने के लिए, नॉट नीडेड यार, ये सब कुछ नहीं, ठीक, अगर ये होता तो आई वुडंट बी गिवन, ट्रस्ट मी, ये सब नहीं आता, मतलब आई डोंट नो हाउ टू टेक स्केल्स और लाइक राइट विद कलर पेन्स, सो जस्ट कीप इट। हैंड राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना है कि मतलब पढ़ने आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आप मतलब उर्दू है इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, ठीक, बस इतना होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू रीड इट, बस as long as they can read it, they're going to give you the marks that you deserve. All right, thank you. If you remember the Bear Act and read it also, but forget the exact section number, then in such situation what we have to do? देखिए, जितना आपको आता है उतना तो आप लिखते हैं, क्योंकि अब नहीं आता है तो पूरा तो छोड़ना नहीं है कि सेक्शन नंबर नहीं आता, तो पूरा तो आपको छोड़ना नहीं, ठीक है, जो जितना आता है उतना तो आप लिखते हैं, इसके बाद मतलब 1-2 मार्क तो कटेंगे आपके उसमें, बट कम से कम 4 मार्क तो मिल जाएंगे 10 मार्क में, तो इट्स फाइन। I think we are सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को तेलंगाना और आंध्रा स्टेट में, जो कंबाइंड आंध्रा और तेलंगाना स्टेट में जो 30 साल जो 30 इयर्स
आप प्रोसिक्यूटर्स को जो ट्रेन करे, पुलिस ऑफिसर्स को जो ट्रेन करे, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत है। इस सारे रोजगार साहब आपके हमारे सामने हैं यहाँ पे। तो he wanted to come physically, but it was like a very short notice this was happening. So we are planning to conduct a very big session after this successful session. So inshallah we look forward. तो एक मैं ये सारे रोजगार साहब से कैसा मिला बोले तो लॉकडाउन के टाइम पे पब्लिक प्रोसिक्यूशंस का नोटिफिकेशन आया था, लाइक 150 प्रोसिक्यूशंस का जो है जॉब नोटिफिकेशन आया था तेलंगाना स्टेट में। तो मैं और रंगा रेड्डी एडवोकेट्स पूरे दोस्त मिलके जो है एक जूम का पैकेज खरीद के वी स्टार्टेड ए वॉलंटरी इनिशिएटिव टू ट्रेन आवर फेलो एडवोकेट्स फ्री ऑफ चार्ज। तो हुआ ये कि 87 कुछ प्रोसिक्यूटर सेलेक्ट हुए आउट ऑफ 150। तो आधे के आधे प्रोसिक्यूटर को तेलंगाना स्टेट में सेलेक्ट है, वो हमारे कोचिंग से जो वॉलंटरी कोचिंग शुरू हुआ था रंगा रेड्डी लॉयर्स एसोसिएशन से। तो एक वॉलंटरी कोचिंग जो है 50% प्रोसिक्यूटर्स को प्रोड्यूस करा तेलंगाना स्टेट में। तो इंशाल्लाह ये भी जो है बहुत अच्छा कोचिंग प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं मटेरियल के साथ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, रोजगार साहब है तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर। सो या रोजगार सर। Just a moment, just a moment. Please unmute yourself now. Yes, please. Well. Sir, please start, sir. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अभी तो एक्चुअली टाइम 9 हो गया है। कितना टाइम मुझको अलॉट करे अभी? 15 मिनट्स। आप बात करिए सर, आप अपने हिसाब से बात करिए सर। ओके ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। अभी तो जो टॉपिक आप असाइन करे थे, तो हाउ टू क्रैक जुडिशियल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, in this regard one of my learned brother has presented in a brief manner, but covering all the subjects, both the special acts and local laws, and also the major acts. Now I would like to advise the aspirants as to how to prepare for examinations perfectly, and I would like to give some tips. The first thing that I would like to say that the very important thing is lots of preparation. Without preparation, there will be no chance for making successful attempt. So now the question is, what is lots of preparation? How it has to be done? So the lots of preparation for making successful attempt, it needs one first thing is hard work. The hard work coupled with patience and determination. There may be maybe interest, maybe everyone may be interested to make successful, but
most of the people fail because of lack of proper preparation with patience and determination. So there is a saying in the English that if you think you are beaten, you will be beaten always. So similarly, what would like to say that if you think if you think you are incompetent, you will be incompetent forever. So first you think that I am competent, you are already qualified. Now the important thing is that to prepare examination with a proper planning, and the planning includes patience and determination. Every day a schedule has to be prepared to cover some syllabus in a systematic way. You have to cover some syllabus, and in your preparation you have to allot the time for reading subject as well as develop a skill of presentation, both in writing and also in a oral presentation. And reading English paper daily is one important to cover the current news as well as to know the legal news relating to means courts of various courts in India and also international issues. And one more important aspect in preparation is always group discussion is one good tonic for you. Don't try to prepare yourself secretly, keeping the doors unlocked, and try to have a group discussion over any subject. It clarifies so many doubts from all the corners. And also it develops the confidence in the mind of the aspirant that I am able to answer, I am able to understand, I am able to present all these things. So before you are going to attempt the examination, these things are important to set your mind first, that I am confident that I can do it, that my preparation is proper, and I am patient, and my determination is truly work out. So for this, you need proper planning as to segregating all the subjects. That is, as already my friend has discussed something about criminal major acts, minor acts, local laws. And local laws and minor acts will have special laws or will have less importance in the judicial competitive examinations, but in for APPs is very, very important, including the Constitution of India. One more thing that I would like to say, that nowadays many people are making attempts, but almost all from our community, the participation, though participation is there, but success is very, very less. So we need to think on that aspect, that why more means the people are qualified, but they are not competent. The expected intellectual means intellectually, the expected subject knowledge to improve our competency.
is more important. Suppose if you want to prepare yourself for examination point of view, no doubt you may get through the examination, you may be successful, but tomorrow it will never be an indication for competence. You may not be a competent person. You may be qualified. So don't try to have an idea that it is enough for me to get through the examination. No. You go through the subject in toto, and that will work out for both preliminary examination as well as main examination. Don't segregate it. You develop means you go through, you get the command over the subject. Now the question is how to frame our timeline and segregate the subjects to cover whole subject, whole syllabus. Suppose if the IPC, if you take it, you go through the first, for any law, it may be a Dowry Prohibition Act, it may be POCSO Act, or it may be TP Act, or it may be Indian Contracts Act, or the IPC, CRPC evidence. First, you try to know what is the object of that object and reasons behind that law. What is the main object of IPC? Object of TP Act, object of Contract Act. Was it the difference between the TP Act and the contracts and the basic principles of the contracts and TP? How similar they are? Where they are differing? So you need to know the framework of that legislation. It will be a permanent imprint in the mind, and you need not by heart the subject. Don't try to by heart the law subjects. Sometimes it will be a more danger that during the course of examination, if you feel any some what you can say strain, and you may not reproduce it. A lawyer, in my opinion, he needs to know how to read the proviso. So he needs so many skills: how to read, how to understand, how to present, how to convince the officer of the court, or how to argue with the opposite party. All these skills are essential. So you try to get the all these skills and a full with what we say expected with the subject knowledge. So here that I would like to give a small example how to read one small take for example Dowry Prohibition Act is a very small legislation. It's less than 10 to 11 provisions are there. Say you need to know the entire framework of the Dowry Prohibition Act. First, you try to know the full name of the legislation, the Dowry Prohibition Act, and the number of the act and the year in which it came into force. And what is the object of the Dowry Prohibition Act? Basically, it prohibits the practice of taking and giving or demanding dowry
it wants to curb this means activity means practice in the society. So when the act came into force with very few number of sections, section 2 deals with dowry. We must know what is dowry. So any property given by one party and received by another party, or given on behalf of one party and received on behalf of another party in connection with the marriage. Understand the kingpin point. In connection with the marriage, giving and taking any property, either it may be mobile or immobile or whatever it may be, the valuable property, any valuable property given and taken by one party and received by another party in connection with the marriage is the kingpin point. In connection with the marriage, but it does not include mahar or dower. So two things are excluded. This definition is of exclusion. Some provisos will have inclusion. It includes, it excludes. So we must need to identify the kingpin ingredient of that particular section. While discussing earlier 378, our land friend has discussed 378 that what are the important ingredients. In it, movement is important. Movement of mobile thing. He need not take away the property. If he cuts the tree, that is enough that the theft is over. Similarly, in a dowry, that property which is given by one person and received by another person, that should be in connection with the marriage, that has to be proved. Very simple. Now we are very clear about the dowry, that is any property, valuable property given by one party and taken received by another party in connection with the marriage, but it does not include mahar or dower. Very simple. So if you by heart it, you may forget some ingredient which is important in your presentation. So the other thing that is demand, means giving a dowry is prohibited, taking dowry is prohibited, demanding dowry is prohibited, not only prohibited but also made punishable. And the property which is that is 3, 4, 5. The property which is given or handed over for the benefit of that bride, that has to be returned after some time as provided under section 6. If that the property was not returned, then that will become the offense. Similarly, these are the over means offenses and punishment. And the second thing is whether the offenses which are provided under section 3, 4, 5, 6 are cognizable or not. Those are cognizable, triable by the magistrate. And section 8A, presumption induced. So initial burden will be on the prosecution and the presumption will be there in favor of the prosecution after the means discharging the initial burden as to the burden of proof. And some rules relating to dowry are also provided. So if you by heart it, it takes more than 1 hour. If you make it with a proper study or combined reading, it will be very easy. You can share the views and you can identify the crux of the section and you can refresh your memory very easily. So now the Dowry Prohibition Act is over. Similarly, try to
understand the true legal positions of the concepts. What is the present day legal position on suicide? Whether suicide is an offense or not. What is the now it is so many people now doubt whether it is and this means if suicide is an offense or not because of the decisions of the apex court in that connection. But in Mental Health Act, section 115 has been incorporated, and we have to read together both 309 and 115 IPC. We have to read together. This is comparative study is also very, very important. That's why I am referring 115. Wherever it is necessary, we need to know the relation between the provisions under one act and with the provisions of the another act. So you take, for example, under TP Act and under Contracts Act, both are contracts. Both are related to contracts. Even for transfer of property, if there is no contract, there is no transfer of property. No, the transfer of property doesn't affect. So, what is the difference? The Indian Contracts Act contains two chapters, mainly two parts. That is the general principles of the contracts and special contracts. Similarly, in TP Act, general principles of the transfer of property and special transfer of property means transactions, means specific transfers, that we can say. So first, when you open any legislation or any act, it may be central act or whatever it may be, try to find out the structure of that act. How many parts are there? And each part dealing with what? And what is the coverage of those particular means aspects? And generally, part 1, it contains preliminary, jurisdiction, certain explanations, and second part will be related to definitions, and some more parts may deal with the administration, office and setup of the office, administrative authorities, their powers and all other things. One more part will be there for penalties, offenses, penalties, and thereafter miscellaneous cognizance of the offenses, competency of the court, and other related things. So first we must know what are the important areas that need preparation for examination point. So the whole idea about that particular means any legislation that will give permanent imprint in the mind, and it saves our time. From any corner, if the question is posed, you can answer it without any hesitation. It saves our time. So it helps the time management, means in a time management purpose. In a short time, we can come to a right conclusion that this will be the answer. If you go by just selection of areas in IPC, common intention is important. For 149 is important, 120B conspiracy is important, criminal conspiracy is important, and culpable homicide amounting to murder, not amounting to murder, theft, robbery, dacoity, extortion, like this. And sometimes if one particular aspect means you may not able to answer if the question is twisted. So we need to prepare not means what you can say that prepare properly
with a particular determination that we must have both subject knowledge and also preparation for examination point of view, not a particular selection of questions. If you take, it will be very difficult. It will be a luck sometimes. Sometimes you have gone through 25 questions, and out of 25 questions, 10 questions have already if you find in the question paper, you will be lucky, no doubt. But sometimes it will kill your planning, and you have to take one more chance. First chance, second chance, third chance, no. So if you prepare, that means with the full subjects, it saves time and you will have a perfect attempt to see the sweetness of the success. I think it is not the right time. Already time is 9:30, and if you need some interaction, please have some interaction or any of your doubts. Then in next time, if time permits me, then I will come over to Hyderabad and I'll take 3 hours or 4 hours to give overall full idea about the preparation and understand how to understand and how to represent our subject. Doubt, sir. Tell me. Sir, recent Telangana public prosecution notification. Yes. Not even 100% seats were not filled. So it is said that in June 2nd, a big notification, including additional public prosecutor, also is about to come. Yes, yes. So how we plan preparation? Can you please guide, sir? So in APP examinations, that the one important point you must know, many people get, means most of the 80% of the candidates will get almost all border marks in major acts, IPC, CRPC, evidence. But when you come to the special act and the local laws, most of the candidates, they won't make a good attempt. So the concentration on special act and the local laws is very, very important. Those who can get good marks, then they will get through the exams, or otherwise it will be difficult. Always the student aspirants try to consume their time for preparation of IPC, CRPC, evidence, constitution, TPAC, like this. But for APP, those who go through and prepare well in local laws and special enactments, including Indian constitution, then they will have fair chances. Tell me. Sir, when notification comes, we are starting a batch on APP preparation, sir. Okay, okay. For your actually, I do not know the news about any news about this notification, when it will come or not. I am in Andhra only. So whenever the chance comes to me, then I will come over there and I will spare some time to see that our community people will have more representation with competency. Our people are more qualified, but not competent. We look forward for your guidance and support, sir. We also need material, if at all you can provide some material which you designed for assistant public prosecutor exams. Actually, I am the person who prepared the material for this APP's first time in Andhra Pradesh. But subsequently, after few years, that was not updated. That's why I could not republish it. So this time I am trying to get it. Update then, sir. It is said that next June 2nd, Telangana Formation Day, a very big notification is about to come, sir, including additional public prosecutor jobs.
maybe. Inshallah, I will try to get the material out with full updation. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your valuable time. I think Actually, I had more ideas to discuss with you, but due to the time, already it is nearby 9:30 over, I think so. participants So, have benefited enormously. I with your have shortened my Next month, presentation. we are planning a very big Tell me. building an auditorium. Next month, we are planning a very big conference. This was done in a very short notice. So next month Okay. we will work. We will prepare enough, and we'll book a big auditorium. In the meanwhile, I advise our community aspirants that to have a group discussion. It's Sure. very, very important. Don't try to individual preparation. You may entertain so many doubts, and those will not be clarified. Yes, sir. So We have group discussion is at least WhatsApp 2-3 group, sir, for group 3 discussion. person. Maybe that may not be so effective. Group discussion physically, if 2 persons are planning with the time, 10 hours for preparation, 2 hours for paper reading, English, improving vocabulary and English presentations, and all these are important for us. Those things develop our levels of the confidence. That's also important to face the interview. So kind of you, sir. So kind of you. This is Amir with you, one of the aspirant over here. So I really appreciate. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका. आप इतना वक्त लेट नाइट और पेशेंसली शुरू से मीटिंग में रहे हैं. Constantly आप ऑब्जर्व भी कर रहे थे. So I really appreciate. But we all over here giving the thanks and giving the gratitude to you. Kindly accept our gratitude from all of the participants over here. And we really appreciate if you can give your presence physically in the forthcoming meeting in the auditorium we are planning. This meeting is within short notice, within we can say that not more than 48 hours. So anyhow, we thought of taking action, and because of your willingness to come online, we got encouragement, and we tried to do our best from whatever the resources available with us. But I'm really sorry, and we are really sorry if any inconvenience caused to you. And I really appreciate your patience for standing so long late night. So please kindly accept our gratitude once again. Jazakallah khair. So I don't want to take much of your time now. Please kindly accept our gratitude, and thank very much for the precious tips you have given, like group discussion, and also that determination, when the criteria and one of material also, like you are so really thankful for that. Okay, sir. So would you like to take leave now, or you want to give some more any other points now? No. If anyone want to have interaction or any doubt, because always dil mange more. So just a moment, Mr. Advocate Shahid Nadeem would like to ask something. Yes. Assalamualaikum sir. Walaikum salam rahmatullahi. शाहिद नदीम एडवोकेट हूँ. जी. गायबाना आपका तारुफ हुआ है सर. मैं पिछले 8 साल से प्रैक्टिस में हूँ और जुडिशियल सर्विसेज का एस्पिरेंट भी हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर भी आपकी बात सफीउल्लाह बेग एडवोकेट जो है वो मेरे सीनियर है सर. उनके से भी आपका तारुफ लिया हूँ मैं. सर आज की मीटिंग में बहुत बहुत ही शानदार आपका एक्सप्लेनेशन था सर. एडिशनल पीपी के लिए हमें क्या एडिशनल जो पीपी एपीपी का जो एग्जाम्स आते हैं सर, वो एक तो होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होते हैं और उसमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए. अगर कुछ एक आध टिप अगर हमें दे दें तो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत ज्यादा सहूलत है. जितना मुझको आइडिया है
तो APP एग्जामिनेशन एंड एडिशनल PP एग्जामिनेशन में फर्क बहुत कम है. If you forget about additional PP examination or APP examination, to prepare for syllabus is very common syllabus. So IPC, CRPC, evidence, constitution, and means local laws and special laws. So you prepare all these things, all these subjects, forgetting about the additional PP and APP. It depends upon the merit. Because इधर number of vacancies कम रहेंगे, उधर APP में ज्यादा रहेंगे. But the only thing that you need to improve subject knowledge. जितना subject knowledge आप gain करेंगे, उतना time आपको effective से आप examination में reproduce करके present करने में time आता. And one thing forget, don't try to fill the papers with the number of cases. You need to present only authoritative decisions. Not like any, suppose if recently one judgment has been delivered by the one high court or some Supreme Court, if that decision is not authoritative on that subject, that's not necessary. It wastes your time. Say for example, if you what you can say, take any topic, suicide. Suppose the legal position of the suicide, if there are 3 or 4 cases are there, the Supreme Court are decided. Those case laws are important. You have to cite with the brief substance related to that validity of that section 309. Not covering all the recent Gujarat High Court or recent Haryana High Court said like this. This is not necessary. Authoritative judgment is enough. You save your time. That's one important. You don't waste your time in the examination hall. Time management papers are there nowadays. A time management में आप जितना time manage कर सकते, that's a 50% success की indication है. जितना time waste करेंगे तो उतना दूर जाना पड़ता है. So try to manage time. Time management करना है तो you have to improve subject knowledge, not just preparation of stock questions. Yes, sir. Stock questions जो भी करता हूँ, so it may be sometimes luck, and he may be qualified, but he may not be competent. Our community needs competent persons in the profession. 100 law graduates में कितने competent है आज? Please think of it. Why? Just passing a law is not enough. More people are interested to how to pass the examination, clear of the examination. First semester, second semester pass हो गया, law आ गया. That is not enough. That is not our motto of our community. The competency is important. Suppose we are incompetent among all other group, what will happen about our image? So not less than thousands of advocates are there, qualified persons are there, but very few competent persons are we can identify in the society. So my advice to all aspirants, one important thing is how to get through the examination. That is one object to secure job, but that is not sufficient. Along with that qualification, you need to have expected intellectuality, which helps to improve our competence. इसलिए APP को additional PP को 2 separate preparations नहीं चाहिए.
Similar syllabus. Murder is murder for additional PP examination. Murder is murder for APP examination. There will be no two common intentions. There will be no two criminal conspiracies. Definitions. All are the same. So we need only subject knowledge. Whatever the syllabus covered, then we concentration thoda zyada karenge. Hope that by June I will release that book with a full updation for APPs and additional PPs both. Any more? We are looking forward to it. It is the most demanded book in the market. Yes. Actually, because मैं अपडेशन नहीं करा था, इसीलिए मैं उसको मार्केट में नहीं रिलीज करा. So our publication will release it in May. I think so. May में या जून में करने वाले हैं, करेंगे. अभी आपके अपडेशन की और आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है साहब. आपकी बुक की बहुत जरूरत है. Sure. अभी मैं एक्चुअली जी बोलिए. ठीक है सर. वेरी मच थैंक यू वेरी मच. क्योंकि थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा है शायद मुझे भी और लग रहा है आप भी लग रहा है वैसे ही. तो अभी हम अगेन थैंक यू वेरी मच. अभी हम कंक्लूड करते हैं. फिर आपको कांस्टेंट टच में रहेंगे हम. और नेक्स्ट जो प्रोग्राम रहेगा हम उसको आपको थोड़ा टाइम एडवांस में इंटीमेट करेंगे. बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सर. वी वांट योर प्रेजेंस फिजिकली. very much we need you. Inshallah. Shukriya. Shall I take leave? You are running. We try to, because it was a physical program, so we try to connect online. So please bear with us. Thank you very much. We will conclude now.